अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं TNN न्यूज़ और मैं हूं सैयदा नाज़िया। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर पीर सैयद इजलाल हैदर और हम आज बहुत ही ज़बरदस्त कैंडिड कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं रिगार्डिंग सम पेन पॉइंट्स। डॉक्टर साहब, आप सर वेलकम टू माय शो एंड योर शो एक्चुअली। एंड सर थोड़ा सा अपने बारे में वैसे बता दीजिए, बेशक लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं अगर आपकी तारीफ़ें शुरू करूँगी तो somebody will have to stop me. Please, thank you so much. Thank you for having me here. First off, I have a short career. I was an ex-banker by profession. Then I became a trainer full time. Been happy ever since. I dabbled into teaching a little bit and dabbled into quite a few things. But I believe that for me the driving force is my learning curve needs to be fed constantly. So now that being said, and the conversation that we were here for, we recently spoke, she and I, and it was kind of her to take out that time. But that being said, हम जब उस दिन गुफ्तगू कर रहे थे, that conversation was regarding the current situation in Pakistan. Everybody talks about it. And there are some nicer, but then there are certain very very accurate but TV पे नाज़ेबा गुफ्तगू हो जाएगी, तो उस तरह की idioms out there regarding the opinions that people have. So why about primarily and specifically only about Pakistan? Because हमारे जो conversation का crux है वो यही है कि क्योंकि दुनिया भर में poor लाइफस्टाइल या पुअर पेरेंटिंग या गुड पेरेंटिंग या वेलनेस, इन सब के ऊपर बहुत कॉन्वर्सेशन होती है। हमारे यहाँ शुरू अब हुई है मेरा ख्याल है, बिकॉज हमारा फोकस शायद कहीं और था, हमारी ज़रूरियात या हमारी बेसिक नीड्स वही सफिशिएंट। I couldn't agree more. ठीक है, हमने बात पर भी शुरू किया, मगर प्रॉब्लम एक और ये है कि हम लिप सर्विस में ज़्यादा बिलीव करते हैं और एक्शंस में कम बिलीव करते हैं। हम तब तक उस चीज़ को अडहर नहीं करते जब तक वी एक्चुअली इट बिफॉल्स ऑन अस personally, हमारे घर तक जब तक मसला नहीं आता। Absolutely. So till that very last minute, we will not address the issue at all. और खुदा न ख्वास्ता जब आ भी जाएगा ना, तब भी हम completely address नहीं करेंगे. We'll try to make do and get away with it. ठीक है, we'll try to find a loophole and just get done with it. Sir, आप पढ़ाते भी हैं? I used to, yes. And unfortunately, although the experience itself was so rewarding. And I famously enjoyed it. But that being said, the people it's a conversation for another time, I reckon. Right, but sure. Again, I believe it all trickles down to the mindset that people are growing up with. अच्छा, हमारे टाइम में जैसे, क्योंकि I am also very from the 80s and 90s, वैल्यू सिस्टम को लगता है आपको कि ढस पड़ी है हमारे? बहुत शिद्दत से। I believe के we were not ready for this influx of technology, I believe, or what went wrong basically? हम nerve पे हाथ नहीं रख सकते। Okay, how about this? मुझे याद पड़ता है कि we had to register all our friends' phone numbers, their parents' names in a diary. Otherwise, we were not allowed to converse with them. Right. Right? We had a check and balance of everything. And the phone was there. This line was connected. I'm sitting in the drawing room or the lounge and we used to have a conversation there and then. Right. Even when the cordless came, we knew that our parents had the liberty to pick up the phone from the other end and listen in on our conversations, and it was allowed because the chaperoning bit was never out. Right. तो अभी न्यूक्लियर फैमिली की वजह से पेरेंटिंग इस वजह से भी डिस्टॉर्ट होगी because both parents are now working, या क्या वजह हो सकती है? I've come across great parents who both work. ठीक है, who are not only both working but they are they've come from stardom. Right. बाप माँ दोनों जो थे, they were international CEOs, दोनों partners के. Wow. Then they got together. They themselves are international CEOs. Not in just Pakistan, abroad. And then there are kids, ठीक है, एक हार्वर्ड में पढ़ रहा है, एक स्टैनफोर्ड में पढ़ रहा है, and lo and behold, the sort of acumen, the sort of culture, the sort of etiquettes that they presented, the parents would send away the help, the domestic help on the weekend. They would entertain on the weekend, and both the sons would serve, imagine that.
You are children to international CEOs. तो पाकिस्तानी माएँ जो हैं, स्पेशली ख़वातीन को मैं एड्रेस करूँगी बिकॉज दे हैव ऑल द रीज़न जिनके ऊपर ब्लेम डाला जाए, वो अपने मेरा लाल, मेरा बेटा, ये सब करके जब वहाँ से ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है एंड इट्स रूइनिंग अदर थिंग्स इफ इट्स नॉट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. मेरा लाल मेरा बेटा करे तो सही ना. बट वो उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है घर में. इट्स अ जेंडर थिंग. कहीं ना कहीं तो हमें नर्व देखिए मैं ना किसी एक जेंडर को ब्लेम नहीं करूँगा इसमें. आई बिलीव एवरीबडी इज टू ब्लेम. एजुकेशन सिस्टम पे आप बात करना चाह रहे थे कि करिकुलम वहाँ से मसला है, तरबियत का मसला है, मसला तो है, लेकिन मेरा ये था कि सिर्फ क्या ये पाकिस्तान का मसला है, ये सडनली अब क्यों इस तरह हम अजीब हो गए हैं एंड नोबडी इज एक्चुअली एक्नॉलेजिंग इट एंड वी आर लुकिंग फॉर समवन टू ब्लेम. How about I put it this way? Yeah. The curricula is in place. The curricula was set by great minds, of course. But those great minds automatically assumed that people with interest, people with good interests in heart would disseminate this knowledge. That never happened. Unfortunately, people who were there to just get paid, people simply रट्टू टट्टू, I apologize for the very crude language, but हम तोते बनाते रहे हैं. We've been generating parrots, absolutely, and हमने वो values inculcate नहीं की. I remember आज से 10 साल पहले ये गुफ्तगू हुई कहीं एक फोरम पे, तो वहाँ पे हमने बात की इकबालियात की. तो the 3 gentlemen sitting with me out of the 4 had no clue what I was talking about, which was not only sad but shocking at the same time. Right? Now circling back, अगर हम इकबालियात और इकबालियात को भी अगर आप जिस तरह अभी पढ़ा रहे हैं बाकी चीज़ों को उस तरह पढ़ाएंगे तो I'm sorry, it won't do a dent on you at all. तो ये यानी कि हम humans या people, it's about breeding, upbringing, or what are we saying? Because obviously there is a lack of, अब जिस बंदे के पास खाने के लिए नहीं है, उसके basics in place नहीं है, एक तो उसकी तवज्जो तालीम पे जाएगी नहीं, और अगर जाएगी तो अपने बेटे के लिए ही जाएगी. दैट्स अ गिवन. ठीक है, बिकॉज बेटी इज़ गोना गो सम प्लेस एल्स. जो हमारा ये साइकिल है, इसको कहीं से हमने ब्रेक अगर करना है, सो देयर मस्ट बी सम कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे हमें काम करना है. हम वन मैन शो से, आप यू केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड, यू वर देयर इन UK, राइट? आप वहाँ से आए हैं, हमारी बात हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं. आपने जितना कंट्रीब्यूट किया है इस फैब्रिक की थ्रेड को दोबारा से वीव करने के लिए, रीवीव करने के लिए, इस पॉइंट पे आके आफ्टर द पेंडेमिक यू थिंक इट्स गॉन अ लिटिल बिट, बिकॉज अब जिनकी ज़रूरियात पूरी भी हैं उनका ग्रीड तो पूरा नहीं है शायद, इसलिए कमर्शियल हो गया वो जो इंस्टीट्यूशन का जो सिस्टम था, फैमिली मैरिज इंस्टीट्यूट या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दे बोथ गॉन. सो if not gone then are going, right? So आपका जो contribution या आप जो चाहते हैं कि मैं ये करूँ तो ये हो जाए बेहतर, what would that be? I think first off I'm sorry, I don't mean to be out of line, but I believe both the children's education is extremely important. I also believe that. ठीक है. But जो हो रहा है sir, I thought there'll be much more emancipation by now. फर्क तो है. अगर मैं तो माँ को एजुकेट करना शुरू कर दूँ ना इस वक्त, जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं मदर्स को उठाऊँ और उनको दोबारा से रीतरबियत या जो भी एक वर्ड यूज़ हो सकता है. मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने आज से 14 साल पहले एक इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की थी. पाकिस्तान became a part of it in like 12-13 years or odd years ago. दिल एक organization है. It is one of the biggest independently supported non-profits working out of Pakistan. What they do is they adopt schools. Okay. ठीक है. OLPC stood for 1 laptop per child. Right. Now what they did was this was a very very low-priced and user-friendly laptop, which was not only meant for the kid but also for the mother. So the mother's health education and mother's grooming to be able to
teach the child Wonderful. was part of it, right? Now this was done 13 odd years ago. I think Sabina ma'am is also doing something on the lines of this Kiran Foundation. Something on the lines. अब now circling back, मेरा point ये है कि अगर उसी चीज़ को आप replicate कर देते, आप replicate नहीं करते, आप उसको hybrid बना के different तरीके से present कर देते, आप उसको culturally acclimatize करके roll out कर देते. Why not? When was the last time true outreach programs were done? I'm just hearing this buzzword. It's a buzzword. Outreach program क्या होता है भाई? कितने लोगों को पता है यहाँ पे? गुफ्तगू बहुत करते हैं. करते कितने लोग हैं? We hear success stories कि जी people who genuinely started something, they became big overnight. Khoshali Bank is there. Akhuwat is there. Then there's this other Finca banks are there who have brilliant returns. They have next to nil default ratios. Why? Because those products were generally designed not to fool people but to actually help people. उनकी success का एक बहुत बड़ा answer ये था कि there was a H2H factor there. A human went there. ठीक है. He connected with the panchayat or with the community, and the community came together. Now those are the people who will eventually grow. But ये जो shortcuts आ रहे हैं दरमियान में, where will this take us? डॉक्टर साहब ये बिल्कुल ज़बरदस्त आपने बात की, लेकिन अगेन आई वुड से दुनिया अब जैसे मेरी एजुकेशनिस्ट से मुलाकात होती है, आपकी भी होती है और बहुत बड़े लेवल पे होती है. यू आर ऑल आउट देयर. स्मार्ट एजुकेशन, स्टेम एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे बच्चों को अगर अभी हम ए फॉर एप्पल पे ही रखेंगे एंड व्हेन वी ट्रैवल अक्रॉस द ग्लोब और वहाँ से हमें बताया जाता है कि वी आर लाइट ईयर्स अहेड ऑफ यू, सुन के बहुत दुख होता है. और वो भी पाकिस्तानी के मुंह से ही सुन के दुख होता है जो 5-7 साल वहाँ गुजार के हमसे लाइट ईयर्स अहेड हो गया. और उनके 10 साल का और 6 साल का बच्चा, उसका माइंडसेट, उसका स्किल्स, उसका एक्यूमेन, उसकी IQ, इट इज़ अस्टाउंडिंग. अगर हम वो ही फॉर्मूला, वो ही क्वालिटी ला के अपने बच्चों में डाल दें, आई एम श्योर एक निच में, एक छोटे सेगमेंट में 0.1% बच्चों के साथ ये होता होगा. वो बाहर जाते होंगे, उन्हें एक्सपोजर मिलता होगा, उन्हें यहाँ पे उनकी मदर्स उस तरह की फोरम्स पे ले जाती होंगी या उनके साथ प्ले डेट्स और इस तरह के फंकी वर्ड्स यूज़ करती होंगी. बट लुक एट आवर पॉपुलेशन एंड लुक एट आवर सिचुएशन. सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट? आउटरीच प्रोग्राम्स के थ्रू हम कर सकते हैं. आप अभी क्या सजेस्ट करेंगे? व्हाट इज़ इट दैट should be, and we can start and we can do a series of programs on that. Okay, how about this? China did something recently, and believe it or not, although I'm not a big gaming fan myself, but I was kind of overjoyed hearing that it has limited its children not more than 3 hours a week is what they can play video games. So what you're doing is jab television in our days, in the old days, televisions were known as idiot boxes. Yes. Right? Still are, right? Now and we're like couch potato. These are bad words. The child who cannot utter 2 words, who could not hold the glass properly, जो infants होते हैं, जो adolescents है, adolescents में आपने उनको cell phones पकड़ा दिए. The other day, one of our friend's nieces was holding his watch or something, जो आजकल Apple Watch थी. Believe it or not, in the next 5 minutes that she was hanging on to it, she took it from one level to another. It took him 2 hours to bring it back to normal settings. And that child cried for 20 odd minutes simply because you took away a cell phone from her. Should she be playing with a cell phone to begin with? No. A 1-year-old baby? She should be exposed to, nicer images, knowledge. Unmentionable people tend to, for us at least, in some circles, people say, for example, in certain cultures, people expose their children while they are in the pregnancy phase. They expose them to knowledge. They expose them to Bach. They expose them to mathematics. They expose them to calculus. They expose them to physics. Right? Yes. They expose them to creative music, etc. So that the child formation has begun since then. We are holding our children. They're sitting right in front of us.
हम वो बेसिक्स इनकलकेट नहीं कर रहे. हम उस सलाम करने के बजाय खुदा न खास्ता कोई वो नाजेबा बात करता है तो एवरीबडी इज ओवरजॉयड. ओह माय गॉड, लिसन टू हिम, ही इज सेइंग दिस. आई मीन रियली, हैज दैट व्हाट दिस हैज कम डाउन टू? तो डॉक्टर साहब आई वुड से कि इनवैलिडेट हो गए हम, इंटरनली हमारा ज़ीरो जा रहा है और एक्सटर्नल लाइक से या आपके कमेंट से मैं अपनी सेल्फ एस्टीम की वैलिडेशन कर रही हूँ, अपनी खुशी की. मेरी सारी ज़िंदगी की मेयार ही यही है कि मुझे लाइक्स कितने मिले, कितने लोगों ने व्यू किया, और जैसे कि टीवी में हमारे यहाँ TRP कितनी आई है. सो अगेन इट्स लाइक what See, TRP made sense. Yes. What are you doing right now? Yeah. You can actually reach out to people and people can reach out to you with their personal issues. Right. And you can impart value. One of the things that I loved about teaching was that not only giving the kids a fighting chance, not only bringing unconventional ways of teaching about, but also helping a few. Now those few or one or two will eventually, it will make a dent in their lives. So अभी हम if we have to wrap it up, the bigger picture currently क्या है and what would you say कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं हूँ. Okay, how about this? How about we reach out to people? Yeah. We talk about, we take their suggestions, what we can jibber jabber about, right? Maybe this jibber jabber would lead nowhere and it'll be just one of those contents that is out there, take like a million other minutes and hours. क्योंकि सही बात सही वक्त पे सही लोगों तक पहुंचना ही सबसे बड़ी इम्पैक्ट है. Maybe we can talk to you, maybe we can talk about you, maybe we can talk for you out there through her, and you identify the issues you want to talk about. I really want to talk about TikTok and the ban and the unban and the ban and the ban unban. And God is my witness, I feel that our society is being degraded further. Who disagrees with me? Who agrees with me? And I'm so sure I'm going to get bashed for this by TikTokers. But yeah, fine, whatever. Let's talk. Let's have a conversation. But a very, very logical, adult and very decent conversation. So the conversation has begun. हमने बात करना शुरू कर दी है कि मसाइल क्या हैं वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है वो बहुत कम लोग जानते हैं. ऐसे एक्सपर्ट्स और ऐसे हीलर्स, ऐसे गुरुज, ऐसे मास्टर्स, इनके साथ कनेक्ट होना है तो आप हमारा बिगर पिक्चर शो देखते रहिए TNN न्यूज़ पे.